Hello everyone, very good evening to all of you. Now is this audible, visible, all clear? There are some technical issues, that's why I was not able to come live. I think it is working now. देखि पारुछन्ति समस्ते, all clear? Thank you for your patience. Shivangi, Pihu, Girija, Anju, all present? All present? All clear? Okay. All right. ठीक আছে. चलो ताले आज गोटे नुआ कॉन्सेप्ट पढ़िबा इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़िबा हमें हैला पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नाउ लास्ट क्लास रे हमें कोन देखुतले इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड आज देखिबा हमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट द क्वेश्चन इज व्हाई दिस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर इन द सेम चैप्टर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दिटा जाक सेम चैप्टर रे काहे के अछन इज देयर एनी रिलेशन Is there any relation between poverty and unemployment? Same chapter रे आपको रखिवार कारण कौन कहूँ poverty and unemployment same chapter रे कहीं की अछन why? No, because both of these they are connected. Both of these they are connected. Poverty leads to unemployment and unemployment leads to poverty. कौन कहली? Very good evening Girija. Now audible, all clear. कौन कहली? Poverty leads to unemployment and unemployment leads to poverty. So there is a direct relationship between these two, or I can say there is a cause and effect relationship. There is a cause and effect relationship between poverty and unemployment. That is why they are both of these topics they are covered under the same chapter. ये कारण रो हमें को सेम चैप्टर रखिछ ना व्हाट इज पॉवर्टी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी कहले हमें कोन बुझछे ना जदी जेतले हमको बेसिक नेसेसिटी लाइफ रो मिलुनी व्हाट आर बेसिक नेसेसिटीज खाद्य वस्त्र बासगृह जोटा कहले फूड क्लॉथ एंड शेल्टर कोन कहले फूड प्लस क्लॉथ प्लस शेल्टर ये तीनटा जेते बेले हमको न मिले एको तो बेसिक रिक्वायरमेंट कहा जाए ना लाइफ रो बेसिक रिक्वायरमेंट कौन फूड क्लॉथ शेल्टर तो हमको फूड क्लॉथ शेल्टर मिलुनी जो हमको फूड क्लॉथ शेल्टर मिलुनी हमें तो कौन कहते पर्सन इज लिविंग इन पॉवर्टी एग्जांपल नवा मन कर फूड पाई मासको दरकार जन को 500 टका क्लॉथ पाई दरकार लेट्स से 300 रुपीस शेल्टर पाई दरकार लेट्स से 200 रुपीस सो टोटल हैला केते ना 1000 केते ना टोटल हैला 1000 रुपीस तो हमें कौन करू ना एठी गोटे लाइन ड्रा कर देबा 1000 रुपीस रो गोटे लाइन ड्रा कर दबा एठी 1000 रुपीस या ऊपर को जो मानकर इनकम ताको कहले एपीएल या तळ को जो मानकर इनकम ताको कहले कोन बीपीएल कोन कहले या ऊपर को जो मानकर इनकम ताको कहले एपीएल या तळ को जो मानकर इनकम ताको कोन कहले ताको कहले बीपीएल बुझियला व्हाट इज एपीएल एंड व्हाट इज बीपीएल बुझियला व्हाट इज एपीएल एंड व्हाट इज बीपीएल कौन कहली 1000 ऊपर को जो मानकर इनकम तो कहले हम अबव द पॉवर्टी लाइन 1000 तळ को जो मानकर तो कहले बिलो द पॉवर्टी लाइन एटी गोटे छोटो कांसेप्ट बुझेबी ठी बुझिबे लेट्स से जनकर इनकम होची 1200 टका ताल से कोड आसी अबव द पॉवर्टी लाइन जनकर इनकम होची 900 टका ताल से कोड आसी बिलो द पॉवर्टी लाइन नो बीपीएल वाला को कोन मिले ना सब्सिडी मिले माने कर गवर्नमेंट जो सब्सिडी देला इन टर्म्स ऑफ फूड और एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी जहां भी देला let's say that our value is 500 rupees मन कर 500 ताले यार रिलेटिव पोजीशन बीपीएल वाला कोडी पळेसो 900 प्लस 500 1400 एटी पळेसो कोडी 1400 तो लेट्स से ये पर्सन नाला ए ये हला बी बी अछि बिलो दी पॉवर्टी लाइन नो बी नो पोजीशन शिफ्ट की कोडी पळेसो ना 1400 बी रो पोजीशन शिफ्ट की कोडी आसीला 1400 ना 1200 रू 1200 होची ए रो पोजीशन बी रो पोजीशन 1400 बट बी रो एक्चुअल पोजीशन केते ना 900 हवा
because of this subsidy B रो relevant position टा बा apparent position is changed to C 1400 हे गला तो एठी सब्सिडी पई बेनिफिट को माने पाती ना जो माने बिलो दी पॉवर्टी लाइन जस्ट तळे थांती एवं लॉस को मानकर हुए जो माने अबव दी पॉवर्टी लाइन जस्ट ऊपर था बुझिला बिलो दी पॉवर्टी लाइन जस्ट तळे जे बिलो दी पॉवर्टी लाइन जस्ट ऊपर जे से मानकर जनकर लॉस आ जनकर प्रॉफिट हेता है इज दिस क्लियर ताले एठी कोन होवा दरकार ना एठी को अप्रोच रे सब्सिडी मिलिया दरकार ना सब्सिडी रे अप्रोच होवा दरकार डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट कौन सारे डिपेंडिंग ऑन द इनकम लेट्स से हमें देखले बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन रे ड्रॉ हिची कोट ना 1000 रे ड्रॉ हिची को ड्रॉ हिची ना 1000 रे ड्रॉ हिची मनकर ए रो इनकम होची 900 ताले आकु सब्सिडी केते टंका रे मिलिबो अपरेंट सब्सिडी केते टंका रे मिलियो दरकार ना आकु 1000 टंका करिया पई जेति दरकार 100 रुपीस हेले आर हेजी मनकर बी रो हिची केते इनकम 700 ताले आपको सब्सिडी केते मिलियो दरकार ना 300 टका सब्सिडी मिलियो दरकार मानकर सी रो इनकम हेची 600 ताले आपको सब्सिडी केते मिलियो ना 400 टका सब्सिडी मिलियो डी रो इनकम लेसे 950 एबे बुझियला ताले आपको केबे मिलियो सब्सिडी ना 50 रुपीस ओनली तो डिपेंडिंग ऑन द इनकम जदी सब्सिडी मिले कोन कहली इनकम ऊपर डिपेंड करी जदी सब्सिडी मिले देन इट विल बी इजी अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट क्लियर बुझियला दिटा कांसेप्ट So when a section of society is unable to fulfill basic necessities, the basic necessity तो पूरा करी पारंदे, then that is called poverty. They are suffering from poverty. Clear? What is poverty? So absolute poverty, this is called absolute poverty. Those who are below the poverty line because of these three factors: food, cloth, and shelter. Because of food, cloth, and shelter, that is called absolute poverty. That is called absolute poverty. Clear? What is absolute poverty? Clear? What is absolute poverty? No doubt. Now question is absolute poverty को express केमिति करा जाए? How absolute poverty is expressed? केमिति express करछे आको? ना मैं total population अनुसार नोते. Let's say total population हमें इंडिया देखले let's say 140 crore. Now ये लगा ना total population. टोटल पॉपुलेशन रू मन कर 140 crore रू लेट्स से 42 crore मन कर 42 crore दे आर बिलो दी पॉवर्टी लाइन ताली ये केते परसेंट हे गला 140 रो 42 टा केते परसेंट हे गला ना 30% हे गला हैला सो दिस 30% इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो कौन कहते ये 30% को कहा जाए हेड काउंट रेशियो सो हेड काउंट रेशियो रो अर्थ कौन ना टोटल पॉपुलेशन नो केते परसेंटेज बिलो दी पॉवर्टी लाइन अछंती कौन कहली टोटल पॉपुलेशन रो केते परसेंटेज बिलो दी पॉवर्टी लाइन अछंती बुझियला बिलो दी पॉवर्टी लाइन कौन बुझेला हेड काउंट रेशियो कोन इट विल बी अ क्वेश्चन प्रीलिम्स रे यही क्वेश्चन आसीबो ऑन हेड काउंट रेशियो तो व्हाट इज हेड काउंट रेशियो हमें देखिले कोन हेड काउंट रेशियो टोटल पॉपुलेशन न केते परसेंटेज कोठी टोटल पॉपुलेशन न केते परसेंटेज दे आर लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन टोटल पॉपुलेशन न केते परसेंटेज दे आर लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन क्लियर बुझिल हेड काउंट रेशियो ना ये गला एब्सोल्यूट पॉवर्टी कथा नेक्स्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी नेक्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी ना रिलेटिव पॉवर्टी हमें कोन ना कंपैरेटिव अप्रोच माने कर हमें कोन करबा इंडिया रे सब रिच मान कर एंदी नंबरिंग कर 1 2 3 रिच नंबर 1 2 3 4 5 एंदी करी कर जदी आसीबा टोटल केते ना 140 करोड़ पर्यंत हो 140 कोटी लोग हम एठी कोन ना टॉप 20% divided by bottom 20%. Top 20% केते और bottom 20% माने rich top 20% माने केते rich 20% ए माने लेकिन ना they are poor 20%.
तो जदि हम reach 20% by poor 20% करिवा reach 20% divided by poor 20% कौन तांगा average income नवा average income यदि एठी भी नवा से average income ताको कौन नवा ना that is called relative poverty बुझिला what is relative poverty तले देखले reach 20% से मानकर income divided by poor 20% income is equal to relative poverty clear living standard much lower compared to others okay all right view बुझिला relative poverty absolute और relative दीटा कथा कहली गोटे कहली absolute poverty आ गोटे कहली relative poverty नो ये क्वेश्चन आसीबो absolute poverty कोन और relative कोन पूछि कोन पढले ताले मते खाली कहि दियो absolute poverty आ गोटे कोन देखले ना relative poverty absolute poverty कौन और relative poverty कौन absolute poverty रे हमें देखिले it is measured in head count ratio this is measured in इटा कौन कहते it is measured in quantile income ratio जोटा को हमें कहते QIR and this is called HCR now this is called HCR now what is HCR and what is QIR clear एटी देखुछे एटा एब्सोल्यूट अप्रोच दिस एटी कंपैरेटिव अप्रोच कंपेयर करूछ हम एटी कोन देखछ ना हियर इज द कंपैरेटिव अप्रोच एटी कोन देखछ ना एटी एब्सोल्यूट अप्रोच क्लियर ना मोर नेक्स्ट क्वेश्चन होची जो पॉवर्टी कैलकुलेशन होची एटा को बेसिस रे होची पॉवर्टी कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर ना इनकम now this is based on income or expenditure income pure income शिवांगी income अच्छा how मोटे एग्जांपल नो लेट्स से इन अ फैमिली देयर आर 4 पर्सन A B C D हैला A रो इनकम माने कर मास को 50,000 B रो इनकम नाही C रो इनकम 10 नहीं C रो इनकम कमे ना C रो इनकम लेट्स से 1 लाख D रो इनकम लेट्स से 1000 ताले या भीतर बीपीएल ले किया आसीबे B आउ D बीपीएल ले पळे आसीबे इटे देखो B आउ D बीपीएल ले आसीबे B and D they come under the BPL category they will come under BPL category होंगे नहीं ना ये A और C एमान कर इनकम टा कोन खाली A और C से फैमिली यूज करछन A B C D भी तो यूज करछन कि नहीं A B C D भी यूज करछन कि नहीं माने B और C B और D भी तांको इनकम टा धर ये से फादर मदर चाइल्ड से माने यूज करछन कि नहीं इनकम वाइज जदि हमें देखिबा इनकम अनुसार देखिले बीपीएल भितर किए आसुचंदी ना बीपीएल आसुचंदी बी और डी ना एक्सपेंडिचर अनुसार जदि हमें देखिबा किए आसुची खर्च तो समस्त अछि गोटे फैमिली कोन समस्त इनकम करन जणे इनकम करियो बट समस्त खर्च अछि गोटे फैमिली इनकम 5 लाख अन्य माने इनकम करन डज इट मीन
कि सी बीपीएल आसीबो as compared to the actually जो माने बीपीएल ले अछंती बीपीएल तो से किछि इनकम ही नथिबो तार but here income is not there but their expenditure is there बुझियला एक्सपेंडिचर अनुसार नो वन कम्स अंडर बीपीएल कौन कहले एक्सपेंडिचर अनुसार नो वन कम्स अंडर बीपीएल क्लियर बुझियला मो कथा ताले एबे कुह मते पॉवर्टी को वे रे हमें कैलकुलेट करिया दरकार ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर poverty should be calculated on the basis of income or on the basis of expenditure को बेसिस रे हवा दरकार है कोमत इनकम बेसिस रे हेले भलो ना एक्सपेंडिचर बेसिस रे हेले भलो कोन एते बुझेली तापर भी को तापर भी कोई पन नो इडिबा देखले इनकम बेसिस रे जदी होची ताले बी और सी बीपीएल ले आस्तोती बट एक्चुअली बी और सी बीपीएल की इटी इनकम बेसिस रे हेले बी और सी बीपीएल ले आस देउछन बट एक्चुअली बी और सी बीपीएल आसीबे कि जो फैमिली रो टोटल इनकम लक्ष प्लस 50,000 1.5 लाख से बीपीएल आसीबे से फैमिली मेंबर no not both so it is calculated on the basis of expenditure not income सेहित में याको एक्सपेंडिचर बेसिस रे ही कैलकुलेट करा जाए not on the basis of income that is why it is calculated on the basis of expenditure not on the basis of income clear बुझियला ताले कोन लिखबा एटी poverty is calculated or estimated poverty is estimated on the basis of expenditure not income now ये गोटे क्वेश्चन आसी परिबो it could be a potential question in prelims next हम देखिए estimation of poverty in India estimation of poverty in India by first it was estimated by V.M. Dandekar and Nilkant Rath committee. V.M. Dandekar and Nilkant Rath committee. है ना? तो ये कुछ after 1947 V.M. Dandekar and Nilkant Rath committee आपको कले ये मान रखले न्यूट्रिशन हिसाब रे poverty को कैलकुलेट कले कते न्यूट्रिशन ना 2250 कैलोरी. What is the nutrition? Nutrition is double to 50 calorie. बुझियला सो 2250 कैलोरी परचेस करिया पई रूरल एरिया रे दरकार केते ना 180 रुपीस अर्बन एरिया रे दरकार केते ना 270 रुपीस को प्राइस 1960 61 प्राइस अनुसार ये कहला डेली जो मानु को 2250 कैलोरी न मिलला दे कम अंडर द बीपीएल कैटेगरी सिंपल कोन कहला डेली जो मानु को 2250 कैलोरी खाइबा न मिलला दे कम अंडर बीपीएल कैटेगरी समान बीपीएल कैटेगरी आसे सो 2250 कैलोरी परचेस करिया पे रूरल एरिया रे दरकार हला केते ना 180 रुपीस अर्बन एरिया रे दरकार हला केते ना 270 रुपीस को कॉस्ट अनुसार ना 1960 61 प्राइस केवल 1960 61 प्राइस रे दरकार है ना तो 1960 61 प्राइस अनुसार जदि हम देखिबा ई प्राइस रे देखा गला 177 मिलियन पीपल दे आर पोर and it was increased to 1968 69 एटा इंक्रीज हे कि केते गला ना 260 मिलियन केते हला 1968 69 ने it increased to 260 million
16 million. Is this clear? This is the committee report. A committee report बुझेला. The next is Planning Commission Expert Group report. The next is Planning Commission Expert Group report. So Planning Commission appointed expert group. Planning Commission appointed an expert group known as Task Force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand. Only Task Force on Minimum Need and Effective Consumption Demand. Hela. In 1989 ne asila এবং it submitted its report in 1993. कौन कला? The report केबे देला? It submitted the report in 1993. यार chairman के थिले ना यार chairman थिले DT लक्कडवाला. Who was the chairman? Its chairman was DT लक्कडवाला was the chairman. ये per capita daily intake capacity अनुसार देखिला. Per capita daily intake capacity केते नेला? ना ये कहला rural area रे दरकार 2400 कैलोरी, urban area रे दरकार केते ना 2100 कैलोरी. ना rural ले अधिक कोन, urban ले कम कोन पई? कोन कहली rural ले अधिक कोन पई एवं urban ले कम कोन पई? मो कह कहता rural रे अधिक कोन पई एवं urban ले कम कोन पई? की कहबे? फिजिकल लेबर टा अधिक कोठी? यदि हम देखिबा फिजिकल लेबर अधिक कोठी? Where is more and where is less? अधिक कोठी और कम कोठी? Physical labor is more in rural area, हाँ कि नहीं? And less in urban area. And this is less in urban area. बुझिला? ताले बे अधिक कैलोरी कोठी लागियो? रूरल ले ना अर्बन ने? ताले बे कैलोरी टा अधिक कोठी लागियो? अर्बन ने अधिक फिजिकल लेबर. ताले सेति पई रूरल ले लागु केतना 2400 कैलोरी. एठी केतना 2100 कैलोरी. बुझिला? Is this clear? Next. Then poverty ratio by Planning Commission Expert Group report. ये परसेंटेज ऑफ बीपीएल पीपल केते आला 1973-74 रे ना ये कहला केते ना 54.9 बा आंसर लिखला बेले you can use it to write it as 55%. 1993-94 आला केते ना 36%. 1999-2000 कला को केते ना 26%. केते ना 1999-2000 रे को कला केते हां 26%. No, 61st round of NSSO survey and poverty estimation. तापर असला कोन तापर असला 61st round of NSSO survey and poverty estimation. ये कहला rural per capita monthly consumption कितना 356.30 rupees, urban per capita monthly consumption कितना 538.60 rupees. कितना एठी ना 538.60 rupees. बुझियो चेष्टा करियो ठीक है. कौन कहला रूरल पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन केते रूरल पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन 356 अर्बन केते ना 538 हैला नो एनएसएसओ मिक्स्ड रिकॉल पीरियड तापर आसला कोन ना एनएसएसओ मिक्स्ड रिकॉल पीरियड नो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कोन एनएसएसओ मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कोन ना ये कोची कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा को ये देखिला केते दिन पे ना लास्ट 365 डेज रिकॉल कला रिकॉल माने कोन रिकॉल करबो ना कंज्यूमर जो प्रोडक्ट गुडा को यूज करछि ताको रिकॉल करिवो सो कला 365 डेज पर्यंत रिकॉल कला फॉर 5 इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड नॉन फूड आइटम्स किए ना जोटा फूड आइटम रे आसेन इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड किए ना जोटा फ्रीक्वेंटली परचेज होउनी मानकर क्लोथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल गुड्स टीवी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन एजुकेशन
एगुड़ा कौन आम डेली किणुचे कि लाइक टीवी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन ये सब को मते ताले कौन देखुचे एगुड़ा कौन आम डेली किणुचे ये प्रोडक्ट गुड़ाक ना व्हेन एवर रिक्वायर्ड जेते दरकार किणुच ना डेली किणुच केते किणुच सिंपल जेते दरकार किणा होची डेली तो किणा होनी they are not purchased daily rather they are purchased whenever they are required बुझेला ये कुछ 365 days recall period रे 5 infrequently purchased non food item गुडा काण एवं poverty estimation करियो by using consumer expenditure data. Next, planning commission uniform recall period, it involves estimation of poverty using consumer expenditure data for 30 days recall period. 30 days recall period for all items, food and non food items, food items and non food items both. ये कौन कैलकुलेट कला ना ये फूड आइटम नॉन फूड आइटम दीटा को इंक्लूड करके कैलकुलेट कला प्लानिंग कमिशन यूनिफॉर्म रिकॉल यूनिफॉर्म माने बोथ केते दिन पई ना 30 डेज ये पथरो केते दिन पई एठी से डाटा को रिकलेक्ट करथराई. नेक्स्ट तो एठी जेते गुडे टॉपिक ऊपर हम डिस्कस करले देयर शॉर्टकमिंग ऑफ ऑल दिस मेथड्स. शॉर्टकमिंग्स कोन ना देयर इज ऑब्सोलेट कंजम्पशन पैटर्न चेंज होची कि नहीं. Now 1960s रे जहा यूज करथले 80s रे से यूज करनथले 2000 रे से आनु 2020 रे से आनु 2025 30 40 रे से आनु ना आगु कोन खाउतला स्नैक्स रे आगु कोन खुदा भजा मुड़ी भजा खाउतले लोक. Now later on changed बरा पियाजी सिंगड़ा नाउ एबे पिज्जा बर्गर ये सब को हे गलानी देखा जीव डोंट वरी. ऑब्सोलेट कंजम्पशन पैटर्न मु कोन कहली ना ऑब्सोलेट हो जाई छी. तो कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पोर चेंज्ड कोन कहली ये लिखि दोती मु कंजम्पशन पैटर्न इटा कोन मत चेंज हेछि ना फिक्स अछि. कंजम्पशन पैटर्न changed or fixed. Consumption pattern changed or fixed? Changed. Consumption pattern कौन कहली चेंज हो जाए चेंज हो जाए आम से अनुसार इन्फ्लेशन टा कैलकुलेट कर सॉरी हम से अनुसार हमें पॉवर्टी टा को कैलकुलेट करबा दरकार. should calculate poverty accordingly. should calculate poverty accordingly. बुझिला. Inflation adjustment. There are issues with adjustment of prices for inflation, both spatially. Inflation change है ना नहीं, price level change है कि नहीं. First point ये वाला. Second point, price level ले changes है कि नहीं. Price level ले changes है कि नहीं. Yes. Inflation है. Price level change means I can say this is what this is. Inflation. हाँ कि inflation है. So एई गुडा कर शॉर्टकमिंग्स पई आ गोटे नुवा मेथड आसिला कोन आज छोटो इटा कोन पई ऑटोमेटिक हे जाउची मु भी जानि कोन तो बड़ बड़ थिला सब. देखिए एथि पई कोन हला ना आसिला गोटे नुवा कमिटी तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट. कौन आसिला तो गोटे कमिटी रिपोर्ट आसिला तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट.
है। तो तेंदुलकर कमिटी ये आनिला कहाँ पर ना हाउस होल्ड कंजप्शन डाटा ऑन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन या ऊपर बेस करी कहाँ पर ना यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल हाउस होल्ड कंजप्शन डाटा ऑन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। नाउ दिस कमिटी रिजेक्टेड द कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन। ये कहला कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन नहीं 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी नहीं। ये कहला कि इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट आइटम्स कौन कौन हमर रिक्वायरमेंट ना cereals pulses milk edible oil non vegetarian item vegetables fresh fruit dry fruit sugar salt spices intoxicant fuel ये सब गुड़ा को आनिला कोथरे ना कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन कौन ये सब गुड़ा को आनिला कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशंस। देन यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट रे कौन देखुछ हम यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट आनो जोटी ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन 2004-5 इट वाज 446 रुपीस पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया 578 इन अर्बन एरिया एतिक आसिला रूरल ले 448 अर्बन ने कते ना 578 आसिला अर्बन एरिया हैला। सो ये इनकॉर्पोरेट कला प्राइवेट एक्सपेंडिचर कोथरे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ना प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन कोथरे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड व्हाई ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ना हमको लगुच कि गवर्नमेंट जोटा दउची दैट इज नॉट गवर्नमेंट जोटा दउची दैट इज नॉट सफिशिएंट सो हमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर खर्च करिया को लागले हेल्थ और एजुकेशन ऊपर। प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर कमिटी आल्सो रेकमेंडेड न्यू मेथड फॉर ऑपरेटिंग पॉवर्टी लाइंस। देन आसिला तेंदुलकर कमिटी फेस क्रिटिसिज्म देन न्यू कमिटी वाज अपॉइंटेड एला ना रंगाराजन कमिटी। सर ओडिशा इंडिया रो सबुटु पोर स्टेट कोन पई कहंती ने टेके जायगा ओडिशा माने एक्चुअली देखले ओडिशा सबुटु पोर नुहे बट सम रीजन्स आर देयर इन ओडिशा व्हिच आर वर्ल्ड वाइड इनफेमस। ओडिशा को रीजन वर्ल्ड वाइड ना फर्स्ट ला केबीके रीजन ऑफ ओडिशा देन नगड़ा नगड़ाटा कोठी के कहबे नगड़ा वेरी इनफेमस फॉर शिशु मृत्यु नगड़ाटा को जिल्ला रे अछि फर्स्ट बिहार ओके ओके पोर नो प्रॉब्लम नगड़ाटा को जिल्ला रे अछि के कहबे नगड़ाटा कोठी अरे जाजपुर जिल्ला रे अछि शिशु मृत्यु हुए बहुत अधिक तो ये ओडिशा इज इनफेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो तेंदुलकर कमिटी पर आउ गोटे कमिटी आसला जार ना होची कोन रंगाराजन कमिटी कोन रंगाराजन कमिटी कौन कला ना ये कहला बोथ कैलोरी एवं नॉन कैलोरी बेस्ड एठी कैलकुलेशन हो न्यूट्रिशन फैट सब गुडा को एठी इंक्लूड कला बुझेला न्यूट्रिशन फैट सब गुडा को इंक्लूड कला। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एटा तुमे कहबो मु सुनिबी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी काहे की बढ़ुची पॉवर्टी बढ़िया पछरे कारण कोन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी कोन समस्त What are causes of poverty? Heavy pressure on population pressure बढ़िले कौन हुए ना per capita resource availability decrease जाए per capita resource availability equals to total population divided by total population divided by total resource divided by total population
टोटल रिसोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन बुझिला हला कोन कहली टोटल रिसोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एटा कहला हम करना पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी ना एटा भी रिड्यूस हे जो एटा भी रिड्यूस हे जो yes unemployment गोटे फैक्टर unemployment leads to poverty unemployment leads to poverty underemployment leads to poverty underemployment कौन जने पढ़ी अधिक पीएचडी करिछि बट क्लरिकल काम करूछि बट डूइंग अ क्लरिकल वर्क कैपिटल डेफिशिएंसी माने लो इन्वेस्टमेंट कैपिटल डेफिशिएंसी ले कोन हबो देयर विल बी लो investment well there will be low investment communal rights protest यदि communal rights protest हुए for example मु कहबी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर वायलेंस इंसर्जेंसी जम्मू काश्मीर रो कंडीशन देखो बा कटक रे जो दंगा हला डिफरेंट टाइप ऑफ communal riots एगुडा हेले पॉवर्टी बढ़ुची ना कमुची ये सब कारण मानक पई पॉवर्टी इंक्रीज होची ना डिक्रीज होची कोन होची इंक्रीज होची आउ किछ एग्जांपल देला ये तो इंडिया रे एग्जांपल देले वर्ल्ड रे आउ किछ एग्जांपल देले मते वर्ल्ड लेवल ले आउ किछ एग्जांपल दियंतु कोन बोले सर आईटी सेक्टर ओडिसा रे कोन पई होनी इफ रहुची लो सैलरी बेस नो नॉट एट ऑल आईटी सेक्टर ओडिसा रे डेवलप करूची नाउ यू कैन राइट अबाउट इन्फो वैली जोटा इन्फो सिटी 2 कहा जाउची इन्फो वैली इन खोरदा और संबलपुर रे हबार अछि आईटी टा को प्रमोट करूची गवर्नमेंट नाउ आईटी इज अ वेरी environment friendly industry and it gives employment to maximum youth एग्जांपल दियो मते किछि नै नै मु कहले कि जेमती इंडिया रे एग्जांपल देले मु नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू काश्मीर सेमती वर्ल्ड लेवल ले किछि एग्जांपल ना दे परिबे किछि कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड लेवल ले किछि कॉन्फ्लिक्ट रो एग्जांपल दे परिबे now currently what is happening in Gaza Strip because of Israel Palestine conflict what is happening in Venezuela अफगानिस्तान रो एग्जांपल दियो बांग्लादेश रो एग्जांपल दियो नेपाल रो एग्जांपल दियो केते एग्जांपल पढि देखो सेही वार और कॉन्फ्लिक्ट रीजन कथा कहूची डिस्टर्ब्ड रीजन मान कथा कहूची बुझिला क्लियर नो डाउट ओके नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी इल हेल्थ लाइक कोविड-19 रे कहले यदि देह खराब हो जेमि पोलियो होतला आगुर बारंबार यदि पोलियो हुए बारंबार कोन कहल यदि पोलियो हुए बारंबार ताले मते कहो पोलियो टाइप ऑफ रोग जदि हुए बेमारी किछि ताले पॉवर्टी देखा दबो कि नहीं ताले पॉवर्टी देखा दबो कि नहीं यस और नो यस और नो यस जदि इंडस्ट्रियलाइजेशन न हुए
यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन न हुए ताहले चलो पॉवर्टी और नॉट यस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी न रहले रोडवेज रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर माने रोडवेज रेलवेज ये सब गुड़ाक जब अवेलेबल न हुए ताहले भी हम कि नहीं एमएसएमई सेक्टर एंड ऑल ठीक अछि ताले कजेस ऑफ पॉवर्टी ना ओडिसा रे कजेस ऑफ पॉवर्टी कोन ना ओडिसा एमती गोटे जगह जोटी फ्लड भी देखिया को मिले एवं जोटी ड्रॉट भी देखिया को मिले फ्लड कोठी ना फ्लड इज फाउंड इन ईस्टर्न ओडिशा ड्रॉट कोठी ना ड्रॉट इज फाउंड इन वेस्टर्न ओडिशा ड्रॉट कोठी फ्रीक्वेंट फ्लड इन ईस्टर्न एंड ड्रॉट इन वेस्टर्न ओडिशा बुझिला then vicious cycle of poverty. Cycle of poverty means once a person enters into the poverty cycle is not able to come out. Poverty cycle भितर जने पसिले और बाहरी पारुनी. So government interference is required. Country is poor because there is no investment. यदि गोटे poor country investment करि परिबो कि no poor country cannot go for investment. Poor country cannot go for more investment, no investment. हैला बुझियला तो जेहेतु इन्वेस्टमेंट नहीं कोड नो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर no investment in education, no investment in health. This is investment नहीं किसी. बुझियला what are the causes of poverty? Next anti poverty program कौन anti poverty program और government schemes और government schemes कौन government scheme अच्छी थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ना सुनते नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम कौन कहले नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अन्नपूर्णा आईआरडीपी पीएम ग्रामीण आवास योजना मनरेगा ना चेंज होगी कौन है मनरेगा ना चेंज होगी कौन है कौन ना ओडिशा गवर्नमेंट रो किसी स्कीम आहार आहार रे कौन होतला आहार रे सब्सिडाइज्ड मील कौन मिलुची आहार रे सब्सिडाइज्ड मील केते ना 5 टंका at 5 rupees for कोमान का पाई ना for urban poor
कोमानक पई ना फॉर अर्बन पोर यस बीबीजी राम देन मधु बाबू पेंशन योजना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना एटा वुमेन एम्पावरमेंट पाई दिस इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट दिस इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है नेक्स्ट मनरेगा हिस्ट्री एंड ऑल एटा मेंस रे दरकार थी दरकार नहीं मनरेगा केते दिन काम मिलथला 100 दिन काम मिलथला ओके जदि किछि डाउट रहिला मते पचार जहाँ जहाँ हमें डिस्कस कले ता भीतर किछि डाउट now what are the solutions to poverty my last topic to be discussed what are solutions to poverty what are solutions to poverty poverty को हमें resolve केमती करि परिया how can we resolve poverty you can have anti poverty programs नहीं anti poverty program आनी पर self employment programs development of self help groups skill development program आनी परिवा capital formation करि परिवा कोन करि परिवा capital formation करि परिवा infrastructural development कौन करिया infrastructural development industrial development commercialization of agriculture kari so there will be more production so that there will be more production बुझेला more production you can go for more export kari paribo and more income he paribo these are the solutions to poverty चल कौन बुझिल को मत कौन बुझिल ताले एतरु जा जा पढिला हमें कौन पढिला आज रो क्लास रो व्हाट इज द लर्निंग टेक अवे कौन बुझिल कौन सिखला आज रो क्लास poverty आउ poverty meaning types causes solution scheme एति पढ़ले तो या पर जहाँ क्वेश्चन आसीबो करि परिबे समस्त 100% क्वेश्चन आसीबो उतरे प्रीलिम्स रे 100% क्वेश्चन आसीबो तो करि परिबे समस्त हबो कि नहीं
ठीक अच्छे करें बहुत बढ़िया आउ नेक्स्ट क्लास पुणी आउ किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करिया ना हो गलानी इकोनॉमिक्स जब हो कहबो ताले आउ अलग सब्जेक्ट स्टार्ट हो तुम देन आम बंद करवा इकोनॉमिक्स वी कैन स्टॉप इकोनॉमिक्स डू योर बेस्ट बहुत बढ़िया गुड दैट इज द स्पिरिट व्हिच इज रिक्वायर्ड ठीक अच्छे ताले आज ये थाओ that's all for this session geography आसीबो सब क्लास हम डोंट वरी सब क्लास आसीबो ऑनलाइन that's all for this session let's wind up thank you good night बुझी होची इकोनॉमिक्स नाउ as promised earlier I will make economics easy for you इकोनॉमिक्स को मु पूरा इजी करी बट द थिंग इज दैट यू हैव टू डिवोट टाइम तुमको पढ़िया पड़ो तुमको टाइम देवा पड़ो तेबे हबो नचेत हबन वेरी इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया ठीक अच्छे थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गुड नाइट